हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मैट्रिक्स के आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स सो यू हैव टू फाइंड x प्लस वाई। कह रहा है, देखिए ये वीडियो जो है हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, ठीक है। यदि ये इस अवयव के बराबर है तो आपको x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक। चलिए स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रिक्वेस्टिंग all of you that you are a new subscriber on my channel. Please like, share and subscribe my channel. Okay, this ये इसके इक्वल होगा, this equal to this, so we can write 2x plus 1. 2x plus 1 is an equal to x plus 3. Now we will transfer 2x here and we will transfer 3 here. So here to x minus 2 is equal to 1 minus 3. So x minus x is equal to minus 2. So x is equal to 2. Okay, now this matrix, this component element is equal to this element. Okay, so we can write y square plus 1 is equal to 26. So y square equal to 26 minus 1, that is 25. So y is equal to plus minus 5. 5 plus minus 5. Now we have to find x plus y. Here x is 2. Okay, when we will take positive value of 5, that is 7. When we take negative value of y, that is 5, so that is minus 3. This is answer. Note down. This question came in CBSE board 2012. Okay, नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। कह रहा है इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस सो फाइंड 3a। ओके, यदि मैट्रिक्स ए की वैल्यू, अवयव की वैल्यू ए की ये है तो आपको 3a ज्ञात करना है। तो 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, we will multiply by 3 in each element of this matrix. Okay, so that is 2 into 3, ठीक, और 3 into minus 2, 3 into minus 5, 3 into 1, 3 into 1, 3 into 4. Now 2 into 3, 6, and that is minus 6, that is minus 15, that is 3, that is 3, that is 12, that is answer. Note down, this is a very important question.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. If matrix A is equal to this and this is a matrix B, so we have to find A plus B. यदि आव्यूह A बराबर ये है, आव्यूह B बराबर ये है, तो आपको A धन B का वैल्यू निकालना है. चलिए निकालते हैं. ध्यान से देखिएगा आप लोग, हम लोग को एडिशन करना है. सो इसका और इसका एडिशन करके लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 + 1. इसका और इसका एडिशन लिखेंगे 2 + 3. इसका और इसका लिखेंगे 3 + 7. इसका और इसका ऐड करेंगे तो 1 + 2. इसका करेंगे तो 3 + 4. इसका करेंगे तो 7 + 1. That is 1, that is 3, that is 5, that is 7, that is 10, that is 8. This is your answer. Note down. देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस एंड मैट्रिक्स B इक्वल टू दिस. तो आपको फाइंड करना है A + B. ठीक है, चलिए करते हैं. ये भी क्वेश्चन सिमिलर होगा प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो हमने लिख लिया इसको पहले A² + B², A² + C² B² + C² A² + B². एडिशन में इसको लिख लिया 2AB 2AC 2BC 2AB. ओके, चलिए ऐड करते हैं इसको. ये इसमें ऐड होगा A² + B² + 2AB. ये इसमें ऐड होगा A² + C² - 2AC. ये इसमें ऐड होगा B² + C² + 2BC. ये इसमें ऐड होगा A² + B² - 2AB. ओके, नाउ दिस इज A + B का होल स्क्वायर फॉर्मूला. सो दैट इज A + B होल स्क्वायर. दिस इज A - C होल स्क्वायर. दिस इज B + C होल स्क्वायर. And this is the formula of A - B whole square. Answer. Okay. Now talk about next question. Student, this is the last question of this lecture. Cos theta into this matrix plus sin theta into this matrix. So we have to solve this. Okay. ये आपका CBSE में आया है. CBSE, इट केम इन CBSE 2012. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई बाय cos theta in each element. So let's start. So that is plus that is this multiply by this. So that is cos square theta. This multiply with this. This is cos theta sin theta. This is cos theta minus sin theta, and it is cos square theta. Similarly, we will multiply by sin theta in each element of this matrix. So that is sin square theta, sin theta cos theta minus sin theta, and that is sin square theta. Now we will add each other. So इसको हम इसमें में ऐड करेंगे. This element is added with this element.
So that is sin square theta plus cos square theta. ओके, दिस बाय दिस, सो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा cos theta. Okay, and this add to this, so sin theta cos theta minus sin theta cos theta, and this is cos square theta plus sin square theta. Okay, these are cancel out, and since we know that the sin square theta plus cos square theta equal to 1, since we know that sin square theta plus cos square theta equal to 1, so that is 1, that is 0, that is 0, that is 1. Now this is unit matrix, this is unit matrix. So unit matrix, this is unit matrix. So now it is I2, it is I2 also. Okay, note down this question, these are very important question for your board exam. Thank you so much.